નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગ્રાફોલોજી કાર્યક્રમમાં અને એમએ ટીવીના આ કાર્યક્રમની અંદર હું ડૉક્ટર કૌશલ્યા દેસાઈ હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર ફરી એકવાર આપણે આ કાર્યક્રમ કન્ટિન્યુ રાખશું. પાછલા એપિસોડમાં આપણે જોયું હતું કે ઘણા બધા પ્રશ્નો, ઘણા બધા ઈમેલ્સ, ઘણા બધા આપણી પાસે પત્રો આવ્યા હતા, જેમના ઘણા બધા આન્સરો આપણે આપી શક્યા નથી. આ હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર જીવનની સમસ્યાઓનું સમાધાન અને જો આપણને કોઈ તકલીફ હોય તો એ તકલીફનું નિવારણ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આપણે જોયું છે કે જન્મથી મૃત્યુ સુધી આપણા જીવનમાં રહેલી દરેક વસ્તુઓને આપણે ધીમી ધીમી ગતિએ ઘણીવાર આપણને જ્યારે મુશ્કેલીઓનો અનુભવ થાય છે ત્યારે આપણને ઈશ્વર યાદ આવે છે. ઈશ્વરે આપણી માટે કંઈક એવું કરીને મૂક્યું છે કે જેને આપણે કહી શકીએ કે ઈશ્વર જો આપણી સુધી નથી પહોંચતા પણ આપણને લોકો આપણા સુધી પહોંચે છે અને એકબીજા આપણને હેલ્પ કરે છે. તો જેમ માનવી આપણી આ પ્રકૃતિ બનાવી છે અને એકબીજા મનુષ્ય એકબીજાને મદદ કરે છે, તે જ રીતે આપણે જોશું કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિની અંદર આપણે ફક્ત એક નાનકડી સહી કરવાથી જો આપણા જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું હોય તો આપણે એકવાર ચોક્કસ એ વસ્તુ કરવી જોઈએ. આપણે જોશું કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર નથી આપણે કુંડલીની જરૂર, નથી આપણે હાથની રેખાઓની જરૂર, કે નથી આપણે કોઈ વાસ્તુ કે ટેરો કાર્ડ કે કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર વગર પણ આપણે સાયન્ટિફિક રીતે એક નાનકડા એવા અક્ષરો તમારા મગજની અંદર વિચારેલી જે વસ્તુઓ છે એ રેખાઓની અંદર કંડારાય છે. જ્યારે આ રેખાઓની અંદર કંડારાયેલી હોય છે ત્યારે આપણે જોશું કે એમાંથી આપણે ઘણું બધું જીવનની અંદરથી નાનામાં નાની વસ્તુ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો આપણે જે હસ્તાક્ષરોનો કાર્યક્રમ છે એ ફરી એક દર્શક મિત્રોને જણાવી દઈએ કે દર સોમવારે 9 થી 10 અને દર શુક્રવારે 8:30 થી 9:30 આવે છે. તો આપણે આજના કાર્યક્રમની અંદર પાછલા એપિસોડમાં રહેલા ક્વેશ્ચન જે અધૂરા છે એનો આન્સર આપણે ચોક્કસ આપશું. તો આપણે જોયું હતું કે ઘણા બધા દર્શક મિત્રોએ મને ઘણીવાર પૂછેલું છે કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર એક મને ખાસ પ્રશ્ન ગયા વખતે પૂછવામાં આવ્યો હતો કે કુંભ વિવાહ, અષ્ટક વિવાહ અને અર્ક વિવાહ એ ત્રણ વસ્તુ શું છે. જો આ ત્રણ વસ્તુ આપણે જોઈએ કે ત્રણેય વસ્તુની સીમા સરખી છે. ફર્સ્ટ, બીજી વસ્તુ કે ત્રણેય વસ્તુ સરખી છે, ફક્ત એનું મહત્વ થોડું જુદું જુદું છે. જેમ કે આપણે જોઈએ કે અષ્ટક વિવાહ એ જ્યારે કોઈ પુરુષને જ્યારે લગ્ન ના થતા હોય અથવા ઘડી લગ્ન થઈને તૂટતા હોય કે એન્ગેજમેન્ટ થઈને પણ મુકાઈ જતું હોય ત્યારે આ અષ્ટક વિવાહ કરવામાં આવે છે. ઘણીવાર આપણે કહીએ છીએ કે દ્વિભાર્યા યોગ. દ્વિભાર્યા યોગ જો જન્માક્ષરની અંદર અથવા જન્મકુંડલીમાં હોય તો એમાંથી એને દૂર કરવા માટે પણ અષ્ટક વિવાહ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો અષ્ટક વિવાહ હોય, કુંભ વિવાહ હોય કે અર્ક વિવાહ હોય, ત્રણેય વસ્તુ એક જ સરખી છે. પણ અર્ક વિવાહ, અષ્ટક વિવાહ અને કુંભ વિવાહ એની ખાલી પદ્ધતિઓ અલગ અલગ હોય છે. જ્યારે આવી પદ્ધતિઓ અલગ હોય છે ત્યારે એમનું ઘણીવાર સ્ત્રી માટે કે પુરુષ માટે અલગ પદ્ધતિથી અમારે આ વિધિ કરવી પડે છે. કેમ કે જેને જેવા દ્વિભાર્યા યોગ હોય કે પછી વૈધુતી યોગ હોય, આવા જ્યારે યોગ હોય છે ત્યારે આપણે આ વસ્તુ કરાવવી પડે છે. અને જો આ વિધિ 18 વર્ષથી પહેલાં કરાવવામાં આવે તો પણ ખૂબ જ સારું રહે છે. તો આપણે જોયું છે કે અષ્ટક વિવાહ, કુંભ વિવાહ અને અર્ક વિવાહ વિશે આપણે આ કાર્યક્રમની અંદર જે ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર આપણે કર્યો. આજનો આપણે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમ આગળ જોઈએ એ પહેલાં મને એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે પેરિસથી. તો પેરિસથી એમણે મને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે જો એનું નિવારણ હોય તો મને તમે ચોક્કસ બતાવશો. તો આજે આપણે જોઈશું કે એમનો જે પેરિસથી ક્વેશ્ચન આવ્યો છે એ ક્વેશ્ચનનો આન્સર ચોક્કસ આપીશું. તો એમણે મને કંઈક હિન્દીમાં લખીને મોકલ્યો છે. તો આપણે જોઈએ. फर्स्ट तो आपने मुझे जो पेरिस से मेल किया है वो उन मेल के आंसर मैं यहाँ पर दूंगी. तो आपने मुझे पूछा है कि फेस पर और हाथ और पैर पर सफ़ेद या मीन्स के वाइट या ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स हुए हैं, तो ये डॉट्स का कारण क्या है और ये किन ग्रहों के कारण हुआ है. फर्स्ट मैं बता दूं कि अगर हम वाइट या ब्लैक डॉट्स हुए हैं तो छोटे हैं या बड़े हैं. अगर छोटे हैं तो कई बार वो तिल होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक तिल होते हैं. मगर अगर वाइट या ब्लैक कलर के पूरी बॉडी पर अगर ऐसे दाग या धब्बे हो गए हैं तो ये राहु दोष का निवारण है. कई बार हमने देखा है कि जो हमारा ब्लड रेड होता है वो धीरे धीरे वाइट हो जाता है
और इनकी वजह से ब्लैक या वाइट धब्बे होते हैं। ये अगर व्हाइट और ब्लैक आपकी बॉडी के अंदर अगर ऐसे प्रकार के कोई धब्बे हैं तो इसे हम राहु दोष कहेंगे। और आपने ये भी लिखा है कि आपने बहुत सारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक अलग अलग तरह की दवाई की है, मगर इनका सॉल्यूशन कोई आपको मिला नहीं है। तो मैं ये आपको बता दूं कि जब भी राहु पावरफुल होता है तब किसी भी चीज जैसे कि खाने में या किसी मेडिसिन की वजह से या कुछ लगाने से या किसी भी तरह का केमिकल अगर बॉडी में हमसे टच हो जाता है या बॉडी में जाता है तब इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अगर हम देखें कि राहु दोष का सॉल्यूशन करना है तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट तो मैं आपको आज बताऊंगी कि राहु दोष का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और अगर आपको ये बॉडी में सारा प्रॉब्लम है तो इनसे अगर हम राहु दोष की विधि करेंगे और आपको एक छोटा सा स्टोन पहनना है, अगर ये स्टोन पहनेंगे तो इनसे हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट तो मैं दिखाऊंगी कि ये राहु दोष है, तो राहु दोष के लिए ये राहु का स्टोन आता है। तो राहु का स्टोन ब्राउन कलर का है। ये ब्राउन कलर मीन्स के ज्यादातर बोलते हैं चॉकलेटी कलर्स में आता है, तो चॉकलेटी कलर्स में आता है। तो अगर ये ब्राउन कलर का राहु आप गले में या उंगली में, बीच वाली उंगली में विधि करके अगर ये पहना जाएगा तो ये ब्लैक और वाइट जो धब्बे हैं या तेल जैसा निकला है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। ये स्टोन पहनने से पहले आपको एक राहु की विधि करनी है। मैंने बहुत सारे एपिसोड में दिखाया है कि ये जो पंचमुखी नाग है इन्हें हम राहु दोष को इन पर हम विधि करेंगे और इसको हम घर में रखेंगे। घर में रखने से हर रोज उसकी विधि और पूजा होगी, तब ये 5 मुख वाला जो नाग है उनसे राहु दोष का सॉल्यूशन होगा। और हम देखेंगे कि राहु दोष के बारे में कई बार बहुत सारे दर्शक मित्रों ने मुझे क्वेश्चन किए हैं। हमारे लाइव कार्यक्रम में भी उन लोगों ने बताया है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये राहु दोष का निवारण ज्यादातर एक मुखी पंचमुखी नाग पर ही होता है, और साथ में वो सिल्वर में, कॉपर में, गोल्ड में, लोहे में, ऐसे 5 तरह के नाग आते हैं, उन पर ये विधि विधान होता है। तो आज हम देखेंगे कि हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम में इनके सिवा भी आज हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो इन क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो देखा है किसी ने लिखा है मुझे कि हस्ताक्षर में राउंड, जैसे कि पूरा राउंड और हाफ राउंड 2 तरह का राउंड होता है, तो सिग्नेचर में राउंड का मीनिंग क्या है, और बताइए कि ये अगर ये राउंड हम करते हैं तो इनका नेगेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हस्ताक्षरों में राउंड, जैसा कि आपने देखा है ये हाफ राउंड और फुल राउंड। साइन में, सिग्नेचर में अगर आप हाफ राउंड या फुल राउंड करते हैं तो उनमें हम देखेंगे कि ये एक तरह का बुध इतना आपका पावरफुल है कि उनकी वजह से आप बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीज कर सकते हैं। जैसे कि आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या फिर आप कोई आर्ट फील्ड में भी काम कर सकते हैं। आपका मेन सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कई बार आप अगर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में अगर आप जंप लाएंगे या तो फिर कोई भी तरह का बिजनेस करेंगे तो इनसे ये बुध का पावर बढ़ेगा, और इनसे ये जो राउंड है वो राउंड आपको बहुत सारे मनी और मैनेजमेंट दोनों चीजें देगा। तो कई बार अगर आपके सिग्नेचर में राउंड है तो उनकी वजह से ये सारी चीजें पॉजिटिव है। मगर कई बार ऐसा होता है कि सिग्नेचर में अगर पूरी तरह का या हाफ राउंड होता है तो ये राउंड का नेगेटिव भी बहुत बुरा है। जैसे कि अगर आपने सारा पैसा उनमें इन्वेस्ट बिजनेस में किया तो भी लॉस होता है, फर्स्ट। सेकंड, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। 2, तीसरी, कई बार राहु इतना पावरफुल होता है कि आप जैसे कि डांसर है या एक्टर है तो आपका नाम इनमें बहुत ही खराब होता है। और साथ में हम देखेंगे कि जब बुध आपके सिग्नेचर में या मीन्स 1 या 2 राउंड आपकी हस्ताक्षरों में है तो ये राउंड के साथ अगर शुक्र या राहु
फिर से कहते हैं कि शुक्र और राहु ये दोनों अगर साथ में हैं या आमने सामने हैं तो ये सारी चीजें नेगेटिव हो सकती है। तो हम देखेंगे कि ये आपने जो मुझे बताया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ना कि आपके बहुत सारे मेरे पास 3000 से भी ज्यादा सिग्नेचर की कॉपी है, उनमें बहुत सारे लोगों को राहु है। कई बार अगर सिग्नेचर में आप ऐसा राउंड अप करते हैं तो इनसे बहुत सारे लोगों को वीजा भी नहीं मिलता है। तो हम आगे देखेंगे कि आज हमारे ये आपका जो क्वेश्चन है पेरिस से, उनके लिए भी मैं बता दिया। आज हम देखेंगे, आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम है। हम ये बताए, उनसे पहले भी बताइए कि हमारा ये हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम MATV में हर मंडे को 9 to 10 और हर फ्राइडे को 8:30 से 9:30 आता है। अगर आपकी जो प्रश्न है, आपकी जीवन में कोई समस्याएं है तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारे MATV के एड्रेस पर लिख सकते हैं या फोन करके भी आप अपने बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमें ईमेल करना नहीं आता है, तो आप मुझे अपने एड्रेस पर पोस्ट से या MATV के एड्रेस पर पोस्ट भी कर सकते हैं, ताकि लिखकर भी आप भेज सकते हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकते हैं। आगे देखते हैं, मुझे आज एक पूरी तरह से खत आया है कि खत में पूछा है कि बहुत सारे स्टोन के नाम बताए, तो उन्होंने कुछ स्टोन दिखाने के लिए बोला है और बहुत सारे स्टोन के बारे में जानकारी भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इतने सारे आपने भेजे हैं, मैं इनके नाम पढ़ देती हूँ, पर कुछ ही स्टोन मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें हम स्टोन बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर आप ये कार्यक्रम कंटिन्यू देख रहे हैं तो मेरे पास जो स्टोन है या किसी को पहनने हैं या अपने पास रखने हैं, तो भी ये स्टोन मैं बार बार दिखाती हूँ, तो आप देख सकेंगे। तो आपने पूछा है कि एमेथिस्ट बताइए, रूबी, स्टार रूबी, मूनस्टोन, नागमणि, टाइगर, लाजवत, फिरोजा, अकीक, नवरंगी अकीक, तुरुमली, नीलमणि, ऐसे बहुत सारे जो स्टोन हैं आपने लिखे हैं। पता नहीं आप भी एस्ट्रोलॉजी में कुछ सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, या सिर्फ आपको स्टोन के बारे में ही जानना है। तो स्टोन अगर हम दिखाते हैं, कुछ स्टोन मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने बताया है कि नागमणि दिखाइए, तो नागमणि 3 कलर का आता है। एक आप देखेंगे कि पर्पल कलर में है। ये नागमणि मैंने बहुत बार दिखाया और ये बहुत कम जगह पे मिलता है और ये कम ही अवेलेबल होता है, क्योंकि ये एक तो कीमती, इतना कीमती है, मीन्स कि अगर हम पहनेंगे तो इतना पावर ही इतना होता है कि जो काम हमने 1 साल में करना है या 1 महीने में भी हो सकता है। तो ये नागमणि है, तो नागमणि पर्पल कलर में आता है। एक मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ग्रीन कलर में आता है और एक आएगा सिल्वर कलर में। तो मैंने आपको ये 2 दिखाए और तीसरा सिल्वर कलर का हम बाद में कभी भी एपिसोड में दिखाएंगे। तो ये था नागमणि। आपने बताया है कि हमें चाहिए स्टार और रूबी और रूबी, तो स्टार रूबी मैं कभी फिर आपको दिखाऊंगी, मगर ये है रूबी। मुझे नहीं पता है कि आप इतने सारे स्टोन मुझसे क्यों देखना चाहती हैं, क्योंकि ये स्टोन तो हर एक जगह पर अवेलेबल होता है। दूसरी जगह स्टोन सिर्फ एस्ट्रोलॉजी या ऐसे ही नहीं पहना जाता है, जैसे कि कोई गहनों में भी फिट करवा के पहनता है। कई लोग बीमार होते हैं तो भी पहनते हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ शौक होता है, बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए भी ये स्टोन पहनते हैं। तो मैंने बताया, और मैं आपको नागमणि सिल्वर में भी बताऊंगी। तो ये सिल्वर में नागमणि है, तो ये सिल्वर में नागमणि। आपने बताया है फिरोजा, तो फिरोजा एक ही कलर में आता है, मगर फिरोजा बहुत सारे लोग पहन सकते हैं और कई बार फिरोजा पन्ने की जगह पर भी पहना जा सकता है। तो हम देखेंगे कि ये फिरोजा ऐसे ब्लू कलर्स में आता है और फिरोजा पहनने से बहुत अच्छा रहता है। आपने बताया है कि तुरुमली, तो तुरुमली भी बहुत कम अवेलेबल होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि तुरुमली 2 या 3 कलर्स में आता है। एक तो ब्लू में आता है, एक ग्रीन में आता है। तो आप देखेंगे कि ये तुरुमली है, तो तुरुमली नेवी ब्लू कलर में आता है, मगर आप देखेंगे तो ये ऐसे इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप आगे पीछे की सारी चीजें
देख सकते हैं। तो तुरुमल्ली ग्रीन कलर्स में भी आता है, ये भी तुरुमल्ली है, तो तुरुमल्ली भी ग्रीन कलर में आता है, मगर ये डार्क कलर में है। तो डार्क कलर में जब तुरुमल्ली आता है तो हमें बहुत सारे ऐसे जो स्टोन है उनके बारे में रियल है या अमेरिकन है या डुप्लीकेट अगर हम देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें क्या है हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि कई बार ये केमिकल चढ़ाया हुआ भी कलर होता है। कोई भी स्टोन को अगर हम केमिकल में इतना हॉट टेम्परेचर में अगर हम कोई भी कांच कलर्स में डालेंगे तो वो कलर पकड़ लेता है, और कई बार ये स्टोन काम करते नहीं हैं। तो हम देखेंगे कि आपने मुझे बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे स्टोन में, मगर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कुछ स्टोन आपको दिखाए। कंटिन्यू आपको ये प्रोग्राम मंडे और फ्राइडे देखेंगे तो भी मैं बहुत तरह के डिफरेंट तरह के स्टोन दिखाऊंगी। कई बार इनके साथ स्टोन के साथ अगर रुद्राक्ष को मिक्स किया जाता है, मिक्स कर से मीन्स स्टोन के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टोन के साथ अगर रुद्राक्ष जॉइंट कह के पहना जाएगा तो इनका पावर 3 गुना बढ़ता है। दूसरी बात कि इनका पावर अगर 3 गुना बढ़ता है, जैसे कि ये हमने अभी दिखाया कि नौरंगी अकीक, तो जब ये नौरंगी अकीक के साथ रुद्राक्ष जुड़ा हुआ होता है तो ये दुगना काम करता है, और उनके साथ जब ये रुद्राक्ष पावर देता है ये स्टोन को भी देता है और अपनी बॉडी को भी देता है, तब ये हेल्थ में बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपने बोला है कि बहुत सारे स्टोन को मैंने दिखाया, और ये अलग अलग तरह के जो स्टोन हैं वो कई बार हेल्थ के लिए भी यूज़ होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कई बार एक से ज़्यादा अगर स्टोन एक साथ एक ही लॉकेट या एक ही ब्रेसलेट में पहना जाए तो ये ज़्यादातर बहुत ही अच्छा काम करता है। कई बार एक दूसरे स्टोन अगर एक काम नहीं कर रहा है तो उनके साथ दूसरा स्टोन जुड़ा हुआ होगा तो ये करता है काम। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा स्टोन अगर इकट्ठे हुए तो बहुत सारे योग बनते हैं, जैसे कि गज केसरी योग बनता है, राज योग बनता है, राज लक्ष्मी योग बनता है, अमला योग बनता है, ऐसे केंद्रुम योग भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं। तो जब ये योग बनते हैं तब उनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो कई बार पॉजिटिव हमें बहुत ही फायदा कर जाती है, और कई बार अगर हमसे ज़्यादा अगर पावरफुल भी स्टोन हमने पहन लिया तो भी प्रॉब्लम्स क्लियर से। तो ये तो हुआ एक सब्जेक्ट, आज तो हो गया कि स्टोन के बारे में बहुत सारे स्टोन दिखाए हैं और उनके बारे में भी हमने किया। तो हम आज आगे बात करेंगे कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो स्टोन का तो पूरा अगर हम लेक्चर देने बैठेंगे तो हमारे 10 घंटे से भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनमें इतनी सारी 2000 से भी ज़्यादा वेराइटी मेरे खुद के पास होती है कि 2000 से भी ज़्यादा स्टोन मेरे पास होते हैं। हम पूरी उस पर एक किताब लिख सकते हैं कि स्टोन क्या क्या काम करता है, कौन से कलर्स में मिलता है, वो स्टोन किस जगह पर अवेलेबल होता है। बहुत बार अलग अलग कंट्रियों से भी ये स्टोन मंगवाने पड़ते हैं। तो ये हुआ, इसलिए आज हम देखेंगे कि ये ग्राफोलॉजी का कार्यक्रम हमारा है हस्ताक्षरों की अनुभूति में। इनके बारे में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो आप ये हमें पत्र लिख के भी पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो MATV के इन स्टूडियो के नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं ताकि आपको भी पता चलेंगे। तो हम आज देखेंगे कि हस्ताक्षरों की अनुभूति का और एक क्वेश्चन है इनके ही बारे में, तो आज हम उनके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये किसी ने गुजराती में हमें पूछा है। तो हस्ताक्षरोની अनुभूति, હસ્તાક્ષરો કઈ રીતે કામ કરે છે, તેમાંથી કયો ગ્રહ પહેરાય છે તે જાણી શકાય છે। હા, સૌપ્રથમ તો હું કહી દઉં કે આ કાર્યક્રમની અંદર મેં અવારનવાર કહેલું છે કે એક નાડા અમથા સિગ્નેચરમાંથી તમારી લાઈફનો પાસ્ટ, તમારું પ્રેઝન્ટ અને તમારું ફ્યુચર ત્રણેય વસ્તુઓ આપણે જાણી શકીએ છીએ। બીજું, અગર પાસ્ટ અને પ્રેઝન્ટ જો બે વસ્તુ આપણે જાણીએ તો ફ્યુચરની અંદર શું થવાનું છે એ ડેફિનેટલી જાણી પણ શકીએ છીએ અને એનું સોલ્યુશન પણ આપણે કરી શકીએ છીએ। એની સાથે એમણે પૂછ્યું છે કે શું એમાંથી કોઈ ગ્રહ પહેરી શકાય છે અથવા ગ્રહ વિશે જાણી શકાય છે। તો હું દરેક દર્શક મિત્રોને કહી દઉં કે મેં આ સબ્જેક્ટની અંદર
પીએચડી કરેલું છે કે એક નાનું એવું સિગ્નેચર કે સાઇન તમારા જે માઇન્ડથી વિચારી અને તમે જે કરો છો કે તમારી પોતાની પસંદગી દ્વારા જે આ હસ્તાક્ષર કરો છો એની અંદરથી આપણે એ ગ્રહ વિશે જાણી શકીએ છીએ. એક આપણે એમ કે સાયન્સ છે તો સાયન્સમાં પણ આપણે પ્લેનેટ વિશે એ જ સિગ્નેચરમાંથી જાણી શકીએ છીએ. એવું નથી કે ખાલી પ્લેનેટ વિશે જ જાણી શકીએ છીએ. જો તમારે કોઈ પ્રકારના યોગ હોય તો એ યોગ વિશે પણ જાણી અને એનું નિવારણ કરી શકીએ છીએ. વ્યતિપાત યોગ છે, મૂળ નક્ષત્ર છે, અમલા યોગ છે, કેન્દ્રુમ યોગ છે, દ્વિભાર્ય યોગ છે. આવા જો યોગ હોય તો એ યોગ વિશે જાણી અને આપણે એનું નિવારણ સંપૂર્ણ રીતે કરી શકીએ છીએ. તો આજે આપણે જોઈએ કે આમણે મને પૂછ્યું છે કે હસ્તાક્ષરો કઈ રીતે કામ કરે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોયું હશે કે ઘણા બધા દર્શક મિત્રો અલગ અલગ રીતે લખે છે. તો આપણે જોયું હશે કોઈકના નાના સિગ્નેચર, કોઈકના મોટા સિગ્નેચર. તો હું તમને દેખાડું કે આપણી જે પુસ્તિકા છે હસ્તાક્ષરનું મૂલ્યાંકન, એની અંદર અમે થોડીક પ્રકારના સિગ્નેચરો બતાવ્યા છે. તો આપણે જોશું કે આની અંદર અમુક પ્રકારના સિગ્નેચરો અહીં કરવામાં આવ્યા છે. તો આ જે હસ્તાક્ષરો કરવામાં આવ્યા છે એ હસ્તાક્ષરોની અંદર ઘણી બધી ડિટેલ્સ આપણને જોવા મળશે. તો આપણે જોશું કે દાખલા તરીકે આ જે હસ્તાક્ષર છે એ આ પુસ્તકમાં આપણને અવેલેબલ હોય છે. આપણે જોયું કે આ જ રીતે આવી પ્રકારના જે માછલી આકારના હસ્તાક્ષર છે એ માછલી આકારના હસ્તાક્ષર પણ આપણે જોઈએ છીએ. તો આવી જ રીતે ઘણા બધા હસ્તાક્ષરો વિશે ડિટેલમાં આ પુસ્તકની અંદર આપેલું છે. તો આપણે કીધું છે કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ હવે ઇંગ્લિશમાં પણ મળે છે. તો તમને ગુજરાતી ના આવડતું હોય તો આપણે ઇંગ્લિશ એડિશનમાં પણ જઈ શકશો અને આપણે જોશું કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ તમે રિયલમાં આની અનુભૂતિ આ પુસ્તક વાંચી અને કરી શકશો. અને એક દર્શક મિત્રનો પ્રશ્ન છે કે આપણે જે કરીએ છીએ કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ ઇંગ્લિશમાં, હસ્તાક્ષરોનું મૂલ્યાંકન અને હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ 2 બુક ગુજરાતીમાં અવેલેબલ છે. આપણે બતાવ્યું છે કે અહીંયા આગળ તમે સ્ટોનને કઈ રીતે ફિટ કરો છો અને કઈ રીતે તમે એનો ઉપયોગ જીવનની અંદર કરી શકો છો. એ પણ આપણે જોશું કે કૌશલ્યા જ્વેલર્સ દ્વારા આપણે એ સ્ટોન ડિફરન્ટ રીતે આપણે બનાવીએ છીએ. દાખલા તરીકે મેં ઘણીવાર બતાવ્યું છે કે આ એક ઓમ છે. તો તમે જોશો કે આને આપણે કૌશલ્યા જ્વેલર્સની અંદર બનાવાયું છે, જેમાં મંગળ, સૂર્ય અને ચંદ્ર 3 વસ્તુ મિક્સ છે. આ છે રાજલક્ષ્મી યોગ અને રાજયોગ કહી શકીએ છીએ. સાથે આ ઓમની અંદર છે. એટલે જે દર્શક મિત્રોને રાહુ દોષની સાથે મંગળનું, સૂર્યનું કે ચંદ્રનું નિવારણ કરાવવું છે, ઘણા દર્શક મિત્રોને અંગારક યોગનું નિવારણ કરાવવું છે, રાજયોગનું નિવારણ કરવું છે, રાજલક્ષ્મી યોગનું નિવારણ કરવું છે, તો આપણે આ 3 સ્ટોનને એક જ લોકેટની અંદર ફિટ કરી અને આપણે પહેરી શકીએ છીએ. તો આપણે જોઈએ છીએ કે આનો પાવર શું કામ વધારે છે, કેમ કે આ એક સિલ્વરમાં મઢેલું છે. ફર્સ્ટ કે પ્યોર ચાંદી હોય એટલે ચાંદી પણ તમારી બોડીને ઇફેક્ટ કરતું હોય છે. બીજી વસ્તુ કે આ જે 3 નંગ એક સાથે એક જ ઓમની અંદર ભેગા કરવામાં આવ્યા છે. તો આપણે જોશું કે ઓમનું મહત્વ જીવનની અંદર ખૂબ જ સમાયેલું છે. તો ઓમ આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો ગળામાં પહેરે છે, ઓમ દરેક જગ્યાએ બનાવવામાં આવે છે. તો ઓમ શાંતિનો સંદેશ પણ આપણને આપે છે. ઘણીવાર આપણે યોગ કરતા હોઈએ છીએ તો પણ ઓમ જેવા ઉચ્ચારો જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે એ ઉચ્ચારો દ્વારા આપણા શરીરની આત્મા છે, આપણા જે શરીરમાં રહેલી શક્તિઓ છે એ શક્તિઓ વિશે આપણને ભાસ થાય છે. અને આ ભાસથી આપણે આપણા જીવનના કોઈ પણ પ્રકારના નેગેટિવ રિઝલ્ટમાંથી અથવા નેગેટિવ ડિસિઝનમાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ અને આના જ કારણે આપણે જીવનની ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનું સમાધાન કરી શકીએ છીએ. તો આપણને એક તો જેમણે બી મને ક્વેશ્ચન કર્યો છે એમને એમનું નામ નથી બતાવ્યું, પણ એમણે મને બેલ્જિયમથી ક્વેશ્ચન કરેલો છે. તો તમે મને જ્યારે બેલ્જિયમથી ક્વેશ્ચન કર્યો છે તો આ ક્વેશ્ચન બહુ જ સારો છે. દરેક લોકોને આમાં ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હશે કે હસ્તાક્ષરો કઈ રીતે કામ કરે છે. તો મેં એ બતાવ્યું. એમની સાથે એમાંથી ગ્રહો વિશે બી જણાવ્યું અને ગ્રહો કઈ રીતે કૌશલ્યા જ્વેલર્સમાં બનાવવામાં આવે છે.
આપણે જવેલર્સ એટલા માટે બનાવ્યું કે આવી રીતના જ્યારે સ્ટોન મિક્સઅપ કરવા હોય છે ત્યારે દરેક ગ્રહોને એક સાથે ભેગા કરી અને એનું મહત્ત્વ સમજાય અને એની ઉપર આપણે બનાવી અને પછી જે વિધિ વિધાન કરીએ છીએ એનાથી આપણા જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા માટેનો એક સરળ અને સાદો ઉપાય છે. આપણે આ કરીએ તો આપણને જીવનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નોનું નિવારણ મળતું રહે. આપણે જોઈએ કે હસ્તાક્ષરીની અનુભૂતિની અંદર એક મેડમ છે જેમણે પૂછ્યું છે, મેનકા એમનું નામ છે મેનકા. તો મેનકાબેન તમે પૂછ્યું છે કે મને એક બાળક છે, મને હજી એક બાળક જોવે છે, પણ કોઈ સંજોગોવશ તમે એ પોસિબલ થતું નથી. તો સૌ પ્રથમ મેં ઘણીવાર કીધેલું છે કે આની અંદર તમારે તમારા હસબન્ડના અને તમારા હસ્તાક્ષરો જોશે, જો બને તો જન્મ કુંડલી પણ જોશે. બે વસ્તુ જો આપણને મળે તો આપણે પરફેક્ટ એનું સોલ્યુશન કરીશું. હું બતાવું કે કદાચ એ વસ્તુ તમારા માટે શક્ય હોય કે ના હોય. તો આ આપણે જોશું કે આ છે ગૌરીશંકર. તો ગૌરીશંકર આ એક રુદ્રાક્ષ છે જે બે રુદ્રાક્ષ મિક્સ કરી અને જોઈન્ટ છે. આ એક કુદરતી રુદ્રાક્ષ છે જે બે જોઈન્ટ છે અને આને આપણે ગૌરીશંકર કહી શકીએ છીએ. ઘણીવાર આ રુદ્રાક્ષ જો બેને આપણે ટોટલ મારીએ તો આના 8 મુખ થાય છે. એ 8 મુખની અંદર આપણે જોઈએ અથવા ઘણીવાર તો 11 મુખ થાય છે. જ્યારે બે રુદ્રાક્ષ ભેગા કરવામાં આવે છે ત્યારે ઘણીવાર 8 મુખ થાય છે અને ઘણીવાર 11 થાય છે, પણ આને આપણે ગૌરી શંકર કહેશું. અને જ્યારે તમારે બાળકનો કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે અથવા એકવાર બાળક થાય અને પછી વારે વારે ઘણીવાર ઘણા લોકોને મિસકેરેજ થાય છે, ત્યારે આપણે આ જે રુદ્રાક્ષ છે એને ગળામાં પહેરવાથી તમારી બોડીમાં રહેલા નેગેટિવ જે થોટ્સ છે એ ધીમે ધીમે બહાર જાય છે અને પોઝિટિવ વસ્તુ બનતી રહે છે. ઘણીવાર આ જે 11 મુખી રુદ્રાક્ષ છે એને ઓમના ઉચ્ચાર સાથે અમુક મંત્ર કરવામાં આવે છે. તો જો એ બાળક માટેના મંત્ર કરીએ આપણે રુદ્રાક્ષ પહેરીને તો એ વસ્તુમાં શક્યતાઓ રહેલી છે. આપણે જોશું કે આમાં પરિવર્તન પણ થઈ શકે છે અને જીવનમાં ન ધારેલી વસ્તુઓનું કાયમ માટેનું સોલ્યુશન મળતું રહેતું હોય છે આપણને. ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે આ કાર્યક્રમની અંદર મેં અવારનવાર આ વસ્તુઓ બતાવી છે, અમારના પ્રશ્નોના ઉત્તરો પણ આપેલા છે, પણ દરેકને કંઈક અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ હોય છે. નોટે કે એક જ પ્રોબ્લેમ એક જ જણને હોય છે. તો ઘણા લોકો આ જાતે પણ કહી શકે છે કે 11 મુખી રુદ્રાક્ષ લાવી એની ઉપર વિધિ વિધાન કરી અને જો એનું આપણે દેખાડશું કે એક ચાંદીમાં બિલ્લીપત્ર આવે છે. આ જે બિલ્લીપત્ર છે એને 11 મુખી રુદ્રાક્ષ સાથે બિલ્લીપત્ર, ગણપતિ અને નાગ આ 4 વસ્તુ ભેગી કરી અને જો એનું નિવારણ કરવામાં આવે તો એ વસ્તુ પોસિબલ થઈ શકે છે અને જીવનમાં પરિવર્તન પણ આવી શકે છે. તો આપણે જોયું કે બિલ્લીપત્ર, ગણપતિ અને એની સાથે 11 મુખી રુદ્રાક્ષ અને નાગ આ 4 વસ્તુ જ્યારે ભેગી કરવામાં આવે છે ત્યારે આ વસ્તુ શક્યતાઓ રહેલી છે કે આનાથી આ વસ્તુ બને. અને તમે મને પૂછ્યું છે કે ઓલરેડી એકવાર તો બેબી તમને થયેલું છે, તો મને ઘણીવાર બેબી માટે એમ કે થોડોક સમય આપણે વેઇટ કરીએ તો એ વેઇટ કરવાથી પણ હેલ્ધી અને સારું બેબી થઈ શકે છે. તો એવું નથી હોતું કે એકવાર થયું પછી આપણને નહીં થાય, એવા ક્વેશ્ચનો ઘણીવાર નથી ઉઠતા. તો આપણે જોઈએ કે આજે આપણે ઘણા બધા હજી ક્વેશ્ચનો છે, તો હું માનીશ કે તમને તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો છે. આજે આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે કે જે થોડાક ડિફરન્ટ પ્રકારના છે. તો એ પહેલાં હું સૌપ્રથમ દરેક દર્શક મિત્રોને કહી દઉં કે આપણા જે કાર્યક્રમની અંદર ઘણા બધા એવા દર્શક મિત્રો છે કે જેમને મારાથી કમ્પ્લેન હોય છે કે કૌશલ્યાબેન ફોન અટેન્ડ નથી કરતા, કૌશલ્યાબેન મેલનો આન્સર નથી કરતા. ઘણીવાર લોકોને એ દુઃખ હોય છે કે આ વસ્તુ અમે નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ, પણ એવું નથી હોતું કે અમે પણ એટલા ઘણીવાર વ્યસ્ત હોઈએ છીએ કે અમે તમારા ક્વેશ્ચનોનો આન્સર આપી શકતા નથી. તો તમે મને મેસેજ પણ છોડી શકો છો અથવા તમે પોસ્ટ દ્વારા પણ એમએટીવીના સ્ટુડિયોની અંદર તમારા જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો લખી અને જો મોકલાવશો તો અમે એપિસોડની અંદર એનું સોલ્યુશન ચોક્કસ તમને કરી આપીશું. આપણે જોઈએ કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિની અંદર મને ઘણીવાર પૂછે છે કે ભાઈ તમે શું આના વિશે શીખવાડો છો? તો હા, હું આપણે ભાવનગરની અંદર આમના ક્લાસીસ ચાલે છે અને આ વસ્તુ અમે શીખવાડીએ છીએ. એવું નથી હોતું કે ત્યાં જ શીખવાડીએ છીએ, અહીંયા યુકેની અંદર પણ ગ્રાફોલોજી
કે એસ્ટ્રોલોજી, ન્યુમરોલોજી, વાસ્તુશાસ્ત્ર કે ટેરો કાર્ડ, આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જેના વિશે અમે ઘણું બધું જણાવીએ છીએ. અને આપણે જોશું કે મારી પાસે જે પુસ્તકો અવેલેબલ હોય છે એ તમે જો ફક્ત વાંચો તો પણ તમને એમાંથી ઘણો બધો ફાયદો મળેલો હોય છે અને તમે એનાથી ફાયદો લઈ શકો છો. કેમ કે જો આ આપણે વાંચશું તો આપણું થોડુંક જ્ઞાન વધશે અને બીજા લોકો વિશે પણ જો આપણે જાણવું હોય કશું તો એ આપણે જાણી શકીશું. તો આપણે જોઈએ કે આ કાર્યક્રમની અંદર આપણે એવા ઘણા બધા જુદા જુદા પ્રશ્નો આવે છે. એ જ રીતે આપણે જોઈએ કે મને એક ક્વેશ્ચન કરવામાં આવ્યો છે, એ ક્વેશ્ચન ચોક્કસ આપણે આગળ લઈ લઈએ અને આ જ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે જોશું કે જીવનમાં ઘણું બધું એવું હોય છે કે જેને કારણે લોકો કોઈ ડિસિઝન નથી લઈ શકતા અને આ ડિસિઝન જ્યારે નથી લેવાતું ત્યારે આપણે એમાં આપણી અંદરની જે શક્તિઓ છે એ શક્તિઓનો ધીમે ધીમે આપણે એમ કહીએ કે વ્યય થતો હોય છે અથવા તો એ શક્તિ ધીમે ધીમે નષ્ટ થતી જતી હોય છે. કે આપણી પાસે એટલી બધી બુદ્ધિ હોય છે કે એટલી બધો પાવર હોય છે કે એનો આપણે કન્ટિન્યુ યુઝ કરી શકતા નથી. અને જો આને યોગ્ય જગ્યાએ આનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો આપણને જીવનમાં આપણે એમ કહીએ કે એક લક હોય, એ લક આપણને ક્યારે લઈ જાય છે કે ક્યારે આપણને છપ્પર ફાડીને આપે છે એ આપણને ખબર પડતી નથી. મને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે વાસ્તુ દોષ વિશે મને થોડું જણાવો, પણ તમે મને એ પ્રશ્ન નથી લખ્યો કે શું તમને પ્રોબ્લેમ છે. પણ હા, તમે મને એટલું જણાવ્યું છે કે જ્યારે તમે આ મકાન લીધું અથવા તો હાઉસ લીધું ત્યારના જે પ્રોબ્લેમો છે એ પ્રોબ્લેમો વિશે હું જણાવીશ. અને એમ પણ કીધું છે કે મને હિન્દીમાં જણાવો, તો એ મને ના સમજાણું કે તમે વાસ્તુ દોષનું નિવારણ ક્વેશ્ચન ગુજરાતીમાં લખ્યો છે અને હિન્દીમાં કેમ જણાવું. ઓકે, તો આપણે જોઈએ છીએ કે તમારા જે ક્વેશ્ચન છે એ ઘણા દર્શક મિત્રોને ગુજરાતીમાં નથી સમજાતા, તો અમે એના માટે હિન્દીમાં પણ સમજાવીએ છીએ. પણ તમારા કાર્યક્રમ કન્ટિન્યુ જોવો પડે છે કેમ કે ઘણીવાર એકનો એક પ્રશ્ન વારે વારે રિપીટ થતો હોય છે અથવા તો એક જ ક્વેશ્ચનના આન્સર ઘણા બધા સરખા હોય છે એને મને. તો આપણે જોઈએ કે મને વાस्तुशास्त्र विषय पूछू है, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपने ये मुझे पूछा है कि वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जब से ये हाउस हमने लिया है तब से ये हाउस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है और प्रॉब्लम्स के साथ भी हम देखेंगे कि आप कई बार इनमें बीमार भी रहते हैं और जब से आप वहाँ रहने के लिए आए हैं तब से आपको मनी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है. तो इनके बारे में हमने पहले भी कई बार बताया है और पूछा है कि अगर ये प्रॉब्लम दोनों रहती है तो इनका क्या रीज़न है. कई बार जो हम हाउस लेते हैं उनकी जो ज़मीन होती है, मीन्स कि वो हाउस हमारे लिए कई बार लक्की नहीं होता है और अगर ये हाउस हमारे लिए लक्की नहीं है तो हम इनका सॉल्यूशन करेंगे. तो आज हम दिखाएंगे कि अगर ये दो चीज़ें हो रही है, जैसे कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है और दूसरा कि आप जब से वहाँ रहने आए हैं तब से आप बीमार हैं. मगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि क्या कई बार आपको ऐसा बिहेव हो रहा है कि जैसे कि कुछ डिफरेंट आपके साथ घटनाएं घट रही हो, डिफरेंट तरह की घटनाएं आपके साथ घट रही हो, तब ये प्रॉब्लम्स होगा. तो मैं आपको दिखा दूं कि वास्तु का जो आपने क्वेश्चन किया था उनके लिए दो चीज़ें मैं खास आपको दिखाऊंगा. कि एक तो ये वास्तु यंत्र है, आप देखेंगे कि वास्तु यंत्र है, इसे आपको आपके घर के अंदर रखना है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि अगर आपको घर का कोई वास्तु है या कई बार विचित्र बिहेव, जैसे कि ना चाहते हुए भी ऐसा बिहेव जब होता है तब आपको एक शिवलिंग का स्थापन करना है. और शिवलिंग का स्थापन कैसे करेंगे, जैसे कि हमने ये नाग रखा इस पर ऐसे शिवलिंग का स्थापन करेंगे. तो आपने देखा कि अगर ये नाग है, ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल या लोहे में भी मिलता है. तो अगर ये नाग में ऐसा शिवलिंग को रख के हर रोज अगर इनकी पूजा की जाए तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें गायब हो जाएंगी. और आपने बोला कि कई बार ऐसी भी घटनाएं बनती हैं जिनके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं, तब ऐसा होता है. तो ये दो चीज़ों के साथ हम देखेंगे कि एक ये और एक, और मैं चाहूँगी
अगर आपको कोई बीमार रहता है तब आपको ये दो चीज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक है नाग और एक है नागिन। मीन्स के ये एक दो कपल जैसे बोलते हैं, ऐसा है जैसे कि ये मेल और फीमेल, ये दो नाग है। इन दो नागों को विधि करके आप पानी में बहा सकते हैं। ये आपको सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। या तो फिर आप वास्तु लूटी को भी विधि विधान करके अगर आप घर में रखेंगे तो इनसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती जाएंगी। और साथ में भी हम देखेंगे कि जो आपके साथ जैसे कि न चाहते हुए भी कुछ घटनाएं बन रही हैं तो वो धीरे धीरे अच्छी हो जाएंगी। और मैं मानती हूँ कि ये हेल्थ भी आपको लगेगा कि कुछ पहले से बेटर हो रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम हाउस बाय करते हैं तो उनकी ज़मीन अच्छी नहीं होती है, या तो फिर लेने के बाद अगर उसका विधि विधान करवा ले या उनमें कोई पूजा करवा ले तो ये सबसे अच्छा रहता है। तो इनसे बहुत ही फायदा रहेगा। आज हम देखेंगे कि ये वास्तु का क्वेश्चन कई बार आता है और इनकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स होती है ये आपने बताई, और ये आपकी नहीं बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। और ख़ास करके आपने पूछा कि यहाँ पर लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो लक्ष्मी टिकाने के लिए लक्ष्मी यंत्र का स्थापन करना पड़ेगा या तो फिर नवग्रह यंत्र का स्थापन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे दिखाऊंगी कि ये नवग्रह का यंत्र है। नवग्रह का यंत्र अगर विधि करके इनका स्थापन घर में किया जाए, या तो फिर श्री यंत्र है, श्री यंत्र पर विधि विधान करके घर में रखेंगे, या हर रोज आधे घंटे इनका एक मंत्र आता है, अगर ये मंत्र हर रोज आधा घंटा कर सकते हैं तो करेंगे, या पूरे दिन में कभी भी करेंगे तो इनका सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिलेगा। और हम इनमें थोड़ा सा परिवर्तन भी देखेंगे और पैसा जो जा रहा है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है और इनमें हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे बेटे की 2 बार शादी होके टूट गई है, तीसरी बार हमें शादी करनी है मगर उसके लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उनको कोई जॉब नहीं है, या तो ये बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। तो हम देखेंगे कि आपने जो मुझे जन्माक्षर भेजी है उनमें, या तो फिर आपने जो हॉरोस्कोप मुझे भेजी है उनमें, या सिग्नेचर में, दोनों चीज़ों में देखेंगे तो उनमें एक तरह का वैद्युति योग है। अगर वैद्युत योग कुंडली में है तो उनका निवारण तो 18 साल से पहले किया जाता है, या तो अगर आपने नहीं किया है तो अब भी आप करवा सकते हैं। और साथ में आपने लिखा है कि 2 बार शादी होने के बाद भी शादी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो सबसे पहले तो आप एक वैद्युति योग का विधि विधान करवाए। तो ये विधि कई बार 18 साल से पहले ही होनी चाहिए या तो शादी से पहले होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद अगर 1 या 2 बार शादी टूटती है या बार बार मंगनी टूटती है तो ये वैद्युति योग के असर है, बॉडी में कर जाती है। और साथ में हम देखेंगे कि वैद्युति योग में विधि विधान के लिए हमें सारी चीज़ें सिल्वर या वाइट में चाहिए। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी कि वैद्युति योग में ये यूज़ होती है और उनसे ये प्रॉब्लम जो है वो निकल जाती है। तो हम देखेंगे कि एक तो आएगा सिल्वर नाग, तो ये जो नाग है ये वाइट आएगा, तो वैद्युत योग की विधि में ये वाइट नाग चाहिए। साथ में चाहेगा एक स्फटिक के शिवलिंग, तो ये देखेंगे कि स्फटिक के शिवलिंग भी जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, या तो फिर वाइट शिवलिंग भी ले सकते हैं। ये 2 चीजें हैं। साथ में देखेंगे कि वैद्युत योग का मीनिंग है अगर बार बार शादी होके टूटती है तो इनके लिए भी हमें चाहिए। तो साथ में इन पूरी विधि में हमें चाहिए एक बिल्ली पत्र जो सिल्वर में आता है, नोटे की रियल बिल्ली पत्र चाहिए। सिल्वर में जो बिल्ली पत्र आता है वो चाहिए। साथ में हमें चाहिए एक मोती, तो मोती अगर ये वाइट में मोती, क्योंकि मोती कई अलग अलग तरह के कलर्स में आते हैं जैसे कि पिंक, ब्लैक, ब्लू ऐसे, मगर हमें ऐसे नहीं लेते तो वाइट मोती चाहिए। तो ये शिवलिंग आकार का जो सफेद मोती है वो चाहिए। साथ में चाहिए वाइट फ्लावर, वाइट कपड़ा और वाइट मिठाई।
ये सारी चीजें अगर हमें मिलेंगी तो इनसे हम पूरी वैद्युति योग की विधि विधान करेंगे और कम से कम 1 या 1.5 घंटा लगता है ये विधि करने से। अगर वैद्युति योग की विधि कंप्लीट की जाए और तो इनसे लाइफ में बार बार जो घटनाएं बनती है वो सारी हमारे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो धीरे धीरे उनका निवारण होता जाएगा। और हम देखेंगे कि इनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स, ऐसे नहीं कि आपको ही है, मगर वैद्युति योग का निवारण सफेद चीज और इस तरह से किया जाता है। कई बार वैद्युति योग में अगर इंसान खुद बैठ के भी विधि करता है तो ये सबसे ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कई बार लोग इन चीजों से विधि करके पानी में बहा देते हैं या तो फिर अपने साथ ले जाते हैं या कुछ भी करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। वैद्युति योग में इंसान होना जरूरी है जिनकी शादी बार बार टूटती है। कई बार ये वैद्युति योग के लिए अष्टक विवाह, हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि जैसे कि अष्टक विवाह, कुंभ विवाह, अर्क विवाह, ऐसी चीजें अगर हम करेंगे तो भी वैद्युति योग को टाला जा सकता है। तब हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे दर्शक मित्रों को मैं बता दूं कि ये जो है वो बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में होता है। अगर इनका निवारण हम पहले से करवा लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। कई बार हमने देखा है कि शादी के बाद तुरंत ही बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार पैसा बिजनेस डाउन हो जाता है, कई बार कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी घटना बनती है जिनमें लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं। कई बार शादी होने के बाद लोग बीमार भी रहने लगते हैं। इस तरह की जब घटनाएं बनती है तब हमारे कुंडली में या होरोस्कोप में हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे योग होते हैं। वैद्युति योग है, द्विपार्या योग है, अम्ला योग है। ऐसे जब योग होते हैं या अमंगल योग होते हैं तब ये सारी घटनाएं बनती हैं और इनका सॉल्यूशन हमने आज बताया है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग खुद भी करना चाहे तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि वैद्युति योग, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी कुंडली में है। हमने देखा कि वैद्युति योग के बारे में आपको बताया और हम देखेंगे कि अभी तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मगर आज हम फिर से एक बार बता देंगे कि हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम एमए टीवी में हर बार आप देखेंगे, हर मंडे और हर फ्राइडे को। और पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं और इनकी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलता है। आज हम देखेंगे कि हमारे पास और भी एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि न हम बार बार ऐसी चीजें दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि कई बार कहा कुछ जाता है और कोई लोग और कुछ बाय करके आते हैं, या तो कई बार हमें कोई गलत चीज मिल जाती है, उनसे हमारी लाइफ का जो सॉल्यूशन होता है वो कई बार नहीं होता। क्योंकि अगर आपने ये चीज अगर देखी हुई हो तो हमें पता चलता है कि यह नहीं, यही है और इसे ही हमें काम करना है, तो इनसे ये बहुत अच्छा रहेगा। आज मुझे पूछा गया है कि 9 ग्रह के यंत्र के बारे में और 9 ग्रह क्या काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हॉरोस्कोप में जैसे कि एक ग्रह अच्छा है, एक बुरा है। जैसे कि राहु है तो राहु के सामने गुरु है। अगर हम देखेंगे सूर्य है तो सूर्य के सामने मंगल है। तो मंगल और सूर्य जब दो एक साथ है, एक ही बॉक्स में है या तो फिर आमने सामने है, तब ये प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि अंगारक योग हुआ, जैसे कि राहु और गुरु हुआ तो चांडाल योग हुआ। शनि और चंद्र साथ में या एक साथ क्रॉस में हुआ तो भी विष योग हुआ। जैसे कि अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रह आमने सामने हो जाते हैं, तब अगर एक को ठीक करेंगे तो एक को बुरा लगेगा। जैसे कि हमने बताया है कि अगर 2 दुश्मन इकट्ठा हो गए हैं तो दोनों दुश्मनों को, एक को शांत करेंगे तो दूसरा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे कि अगर एक साथ 2 ग्रह है या एक अच्छा और एक बुरा ग्रह, एक दोनों आमने सामने हैं, तब ये बहुत सारी लाइफ में डिफिकल्ट खड़ी करते हैं। तो तब ये हमें सॉल्यूशन करना होता है। और कई बार 9 ग्रह होते हैं, अगर हम उनको यूज करेंगे तो सारे जो हमारे प्लैनेट है वो प्लैनेट कंट्रोल हो सकते हैं। अगर ये हम दिखाएंगे कि बहुत सारी चीजें 9 ग्रह के यंत्र में आती है। जैसे कि आज हम दिखाएंगे ये 9 ग्रह का पेंडन है। इस पे हम विधि विधान करके गले में भी पहन सकते हैं या अपने मंदिर में या ऑफिस में भी रख सकते हैं।
इसी तरह इनमें 9 के 9 ग्रह है। आपने जैसे कि देखा, एक आएगा 9 ग्रह का यंत्र है, तो ये आप देखेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड में होता है, गोल्ड प्लेटेड होता है। ये अगर 9 ग्रह है, इन पर हर एक ग्रह पर एक एक विधि करके इसको हम शांत कर सकते हैं। इनसे भी हमें बहुत सारा फायदा होता है। और हम कहेंगे कि बार बार ऐसी घटनाएं जो बनने वाली होती है वो धीरे 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 रुक जाती है, और ग्रहों का पावर भी हमारे लाइफ में रहता है। तो जब ये 9 ग्रह होता है, इनमें ब्रेसलेट भी आता है और 9 ग्रह का एक पिरामिड आता है, तो 9 ग्रह में एक पिरामिड भी आता है। अगर हम देखेंगे ये सारी चीजें हमारे पास है, तो इनके हम विधि विधान करके इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और कई बार इनमें हमारे लाइफ में परिवर्तन भी धीरे धीरे आ सकता है। तो आज देखेंगे कि हमें पूछा कि 9 ग्रह के यंत्र में क्या करेंगे, मगर 9 ग्रह के यंत्र में विधि विधान होना जरूरी है। कई बार आप लोग शॉप से खरीदते हैं या आपको कोई गिफ्ट में देता है, तो ऐसे ही पड़ी रहने से कुछ काम नहीं करता है, मगर उन पर अगर विधि विधान, उन पर मंत्र और 9 ग्रह का दान करना पड़ता है, तभी उसमें लक्ष्मी का आह्वान होता है और लक्ष्मी हमारे घर आती है। और जो सारे प्लैनेट है जो नेगेटिव और पॉजिटिव करते हैं, वो हमें अच्छा भी अच्छी तरह से लाइफ में कुछ हेल्प करते हैं। तो हमने देखा है कि प्लैनेट अगर ज़्यादा पावरफुल हो तो भी ये प्रॉब्लम्स होता है। तो आपने पूछा है कि 9 ग्रह के यंत्र के बारे में, तो हमने बताया कि 9 ग्रह क्या काम करते हैं। तो 9 ग्रह अगर हम 9 सभी लोगों को जैसे कि हम एक तरह व्यवहार करेंगे, उसी तरह ऐसा ही 9 ग्रह को अगर हम विधि विधान से पावरफुल करेंगे, तो ये हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि ये हमारे हस्ताक्षरों की कार्यक्रम है, हस्ताक्षरों की अनुभूति। इनमें हम ग्राफोलॉजी मीन्स के सिग्नेचर पे से प्रेडिक्शन करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें सिग्नेचर भेजते हैं, मगर कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, सिर्फ सिग्नेचर भेज के हमें वो मेल कर देते हैं या पोस्ट से हमें भेज देते हैं, मगर आपकी प्रॉब्लम्स क्या है ये आप नहीं बताते। हाँ, अगर आपको पूरी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन करना है, तो फिर या तो आपको कम से कम 20 या 30 मिनट लगते हैं, या तो आपको खुद मिलने आना पड़ेगा, या तो फिर आपको कई क्वेश्चन के बारे में स्पेशली हमें बताना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में पास्ट या प्रेजेंट के बारे में जानना है, शादी के बारे में जानना है, जॉब है, बिजनेस है, कैरियर है, क्या जानना है, ये आपको हमें कुछ लिख कर भेजा पड़ेगा। सिर्फ सिग्नेचर भेजा तो ये नहीं कि हम सारा प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अगर हमें कुछ लिमिटेड देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो हम देखेंगे आज हमारे ये हस्ताक्षरों की अनुभूति कार्यक्रम में और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को हम कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले हम बोलेंगे कि हमारे स्क्रीन पर ईमेल आईडी आता है, तो ईमेल आईडी भी नोट करें और नंबर भी नोट करें। इस पर आप मेल कर सकते हैं सिग्नेचर, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे फोन करके भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हमारे MATV के स्टूडियो में भी आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप राइटिंग में भी कुछ लिख के हमें भेजेंगे तो भी हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। आज फ्राइडे के दिन हमने देखा कि आइए इस एपिसोड में जो भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीक में जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा, ऐसे ऐसे हम आपके क्वेश्चन को आंसर देते जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। एक પ્રશ્ન પૂછ્યો છે મને વિશાલ ભરતભાઈએ કે મારી કુંડલીમાં વ્યતિપાત યોગ છે, તો તે શું છે અને તેનું નિવારણ છે। આજે આપણે આ હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર ઘણા બધા એવા યોગ વિશે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, ઘણા બધા એવા ક્વેશ્ચન છે, પણ આપણે કહેશું કે વ્યતિપાત યોગ શું છે અને તેનું નિવારણ કઈ રીતે થાય છે એ પણ આપણે તમને સમજાવશું। પણ તમે આ તો એક આખો સબ્જેક્ટ થઈ ગયો કે વ્યતિપાત યોગ શું છે। ઓકે, તો હું તમને ફરી શોર્ટમાં સમજાવી દઉં છું કે જન્માક્ષરની અંદર ફર્સ્ટ પેજની અંદર જે રીતે વાર આવે છે, જે રીતે નક્ષત્ર આવે છે, જે રીતે તિથિ આવે છે, તારીખ આવે છે, એ જ રીતે આપણી કુંડલીની અંદર એક પ્રકારનો યોગ હોય છે। તો યોગથી આપણા જીવનમાં એમ જાણી શકાય છે કે આપણું વર્તન કેવું હશે, આપણે કઈ પ્રકારનું ભવિષ્યમાં પણ વર્તન કરી શકશું, અથવા તો આપણા જીવનમાં જે કઈ ઘટનાઓ બનવાની છે એ ઘટનાઓ કઈ પ્રકારની હશે એ આપણે યોગ ઉપરથી પણ જાણી શકીએ છીએ। ઘણીવાર આપણે યોગ ઉપરથી એ પણ જાણી શકીએ છીએ કે જીવનમાં જે કાંઈ મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે એ મુશ્કેલીઓનું નિવારણ કરવા માટે આપણને એ યોગ
માંથી ખબર પડી જશે કે આપણા જીવનમાં અઘટિત ઘટનાઓ આ સમયે આ વસ્તુ અથવા વ્યક્તિઓ સાથે કે કોની સાથે બનવાની છે આપણને અગાઉ ખબર પડી જશે. તો આ એક પ્રકારના યોગ છે. તો વ્યતિપાત યોગ પણ એવી જ વસ્તુ છે, પણ વ્યતિપાત યોગની અંદર કાસાની વાટકી, એમાં ઘી કે તેલ હોય છે અને અમુક વસ્તુઓ જોતી હોય છે. એ વસ્તુથી આપણે વ્યતિપાત યોગની વિધિ કરી શકીએ છીએ. વ્યતિપાત યોગની વિધિમાં પણ મહત્વ કાસાની વાટકી અને અમુક વસ્તુઓ ખાસ છે, કેમ કે કાસાની વાટકીમાં તેલ, ઘી અથવા તો પાણી ભરી અને તમારું મોઢું જોવામાં આવે છે અને એવી રીતને આખી પ્રોસિજર હોય છે. કમસે કમ અડધી કલાક જેવું થાય છે. પણ એ વ્યતિપાત યોગ જીવનની અંદર એટલો બધો આપણને ત્રાસદાયક હોય છે કે જેનાથી આપણે કોઈ પણ ડિસિઝન લઈએ છીએ એ મુશ્કેલીઓ આપણા જાણે ઘર કરી ગઈ હોય એવું ફિલિંગ કરતું હોય છે. અને એમાંથી આપણે જેટલું બહાર નીકળવા ટ્રાય કરશું એટલું જ આપણને વધારે તકલીફ થાય છે. તો વ્યતિપાત યોગ આવું જોઈએ. મેં તમને શોર્ટમાં સમજાવ્યું છે, પણ વ્યતિપાત યોગ બિલકુલ સારો નથી હોતું અને જેની કુંડલીમાં આ વસ્તુ હોય છે એણે નિવારણ પરમનન્ટ કરાવવું જોઈએ, કેમ કે આ તકલીફ તમારા જીવનની અંદર જ પડેલી વધારે મુશ્કેલીઓનો વધે છે. ઘણીવાર એવું બી થશે કે અમુક ઉંમર થશે પછી તમને આ જે યોગ છે એ તમને એકે બાજુના નહીં રાખે અને તમારે કશું પણ કરવું છે તો એ કશું થશે નહીં. એટલા માટે આ વ્યતિપાત યોગ છે અને એનું નિવારણ તમારે પરમનન્ટ કરાવવું પડશે. તો આપણે જોઈએ કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ કાર્યક્રમની અંદર આપણે આવા ઘણા બધા આજના ક્વેશ્ચન છે એ કંઈક ને કંઈક વિશે જાણવા અથવા તો કઈ વસ્તુથી શું થાય છે એ વસ્તુનું મહત્વ માટે આપણને પૂછવામાં આવ્યા છે. તો આપણે જોઈએ કે આ કાર્યક્રમ આપણો કન્ટિન્યુ છે અને કન્ટિન્યુ કાર્યક્રમની અંદર તમારે હજી પણ જો કોઈ ક્વેશ્ચન કરવા હોય તો તમે મને લખી અથવા મોકલી શકો છો. આપણે જોઈએ કે હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિની અંદર આપણા જીવનમાં જે કોઈ ઘટનાઓ બનતી હોય છે અથવા તો મુશ્કેલી હોય છે એના નિવારણ માટે આપણે અહીં આ કાર્યક્રમ MATVમાં બતાવીએ છીએ. આપણે જોઈએ કે આગળ હજી ઘણા બધા ક્વેશ્ચનો છે. એ ક્વેશ્ચનોને આપણે કન્ટિન્યુ રાખશું, પણ આપણે સમય આજે પૂરો થઈ રહ્યો છે અને સમય પૂરો થવાની સાથે પણ આપણે આગલા એપિસોડમાં આપણે આજે પ્રશ્નો છે નિવારણ કન્ટિન્યુ રાખશું. અને આજના આ કાર્યક્રમની હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિની અંદર અહીં જ આપણે એક નાનકડો વિરામ લેશું અને વિરામની સાથે આપણે ફરી આવતા અઠવાડિયે મળશું. અને મારા MATVના અને મારી તરફથી હસ્તાક્ષરોની અનુભૂતિ અને દરેક દર્શક મિત્રોને મારા